Okay, so today the topic that we are going to cover is cardiovascular diseases and hypertension. Also, we would be covering in that. All right. So when we talk about cardiovascular disease, these are what kind of diseases? These are primarily the conditions which are related to the heart condition. Okay. So they may affect the heart. They may affect the surrounding blood vessels, which we know, which are prominently named as arteries or veins. So क्या होता है? There is a set of blood vessels जो जिन्हें हम बोलते हैं arteries, and there are a set of blood vessels जिन्हें हम बोलते हैं veins. So heart में blood flow in and blood flow out in blood vessels से होता है. Okay, you can relate and picturize the structure of these as a pipe. Pipe में से how the water flows. It is the same how the blood flows through a pipe, and these are arteries and veins. So when there is blockage in these arteries or veins, a pressure is created on the walls. Okay, because the blood is flowing at a high speed and passage narrow ho gaya hai. If you just can see this diagram, this is plaque formation because of the bad diet or because of too much of uh, cholesterol in the body or too much of bad fats in the body. The deposition increase hoti ja rahi. Okay, and the pathway jahan se blood flow hoga would reduce hota ja raha hai. So as the pathway is reducing, it is creating pressure on these walls, and as the walls get the pressure वो कभी कभी burst out हो जाते हैं, and this results in many of the heart conditions like atherosclerosis, coronary heart disease जिसमें ये heart failure conditions है, dyslipidemia where the total cholesterol, LDL levels, HDL levels, triglyceride levels ये varied रहती है, high and low रहती है, which are not good for the body. There are congestive heart failure, cerebral infarction, PV, cardiomyopathy and pericarditis. ये सारी की सारी जो conditions हैं ये heart से one or the other way में linked है. Okay, so moving forward, what are the causes of cardiovascular disease? Now, there are two types of causes for cardiovascular disease mainly. One is modifiable, another is non-modifiable. Modifiable वो है जिन्हें हम change कर सकते हैं, जिन्हें हम reverse कर सकते हैं. Non-modifiable are those which cannot be reversed as age. As the age progresses, the arteries shrink, and the muscular heart is a muscle. So muscular strength also decreases. So age ke saath saath there are degenerative changes that are happening inside the body. So that is a non-modifiable factor. We cannot do much about it. Sex of an individual. Males to some extent at the earlier age, around 40s or of age, average age, they are more prone to CVD. But females, as they grow older and reach around menopause age, or they have the pregnancy or gestational diabetes, they are more prone in that age group. Then if anybody has a family history, their parents has these issues, or their grandparents, either maternal or paternal, have these issues, will be considered as the non-modifiable factors. Modifiable factors are those which we can easily work on them. We can work on the diet, we can work on the lifestyle, and we can reverse them. So hypertension is high BP. We can modify the diet, we can modify the lifestyles, and we can reverse it. Likewise, for diabetes, obesity, smoking, physically who's inactive or leading a sedentary lifestyle, or who's having dyslipidemia. Dyslipidemia means, so dyslipidemia usually जब हम when we calculate or when we talk about lipid profile, so the things that come on is total cholesterol, LDL, HDL,
triglyceride, and VLDL. So these are few things that we talk about when we are talking about lipid profile. So dyslipidemia में क्या होता है? This increases. Okay, LDL is also a bad cholesterol, also increases. HDL is a good cholesterol, it protects our heart, this decreases. Triglyceride, again, it increases, and this is not good. And VLDL, again, it increases. Okay, VLDL, LDL, triglyceride, total cholesterol, normal levels से ज़्यादा अगर होते हैं, they are bad for our heart health. HDL ज़्यादा होना चाहिए because it is a protective cholesterol, and अगर वो कम levels में होता है, that is also bad for us. So dyslipidemia में levels modified hoti hai, and obviously with diet and lifestyle we can easily reverse them. Third thing that we do is all people who are at risk is females. When the female is at risk, if she has this pregnancy, hypertension pregnancy के time पे अगर होती है, at the later stage she will be at risk. If during the pregnancy she has diabetes, she will be at risk. If she has PCOS, the risks is there. Menopause में muscular strength decrease हो जाती है, hormone imbalance होता है, जिसकी वजह से और issues भी होते हैं. Systemic inflammatory rheumatologic disease is anti-autoimmune condition. It usually happens during the menopause phase. This also creates a risk for CVD. And female usually goes through phases, like during menopause or during pregnancy, during lactation, there are levels of stress and depression because of the hormone imbalance that is happening in the female body. उस वजह से भी she becomes at the risk of CVD. So these are the causes. Okay, now as we talked about, there are things, VLDL, it is not considered because अगर LDL, HDL, total cholesterol and triglycerides को हम monitor नहीं कर पाते, so VLDL comes last. This total is total cholesterol. So obviously these are the ideal values. Borderline values तक भी हम suggest करते हैं कि medicines नहीं लेनी चाहिए, but when the levels go too high or too low, then sometimes we need to start the medicines. Okay, because total cholesterol में क्या होता है, sometimes the individual is going very good with diet, he's very conscious, secondly he is taking good care of the activity levels also, but होता क्या है कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा सिंथेसाइज होता है. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस जब हम फैट्स कर रहे थे, आई थिंक डे 2 ऑफ आवर कोर्स. सो बॉडी में नेचुरली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है, एटलीस्ट 2 मिलीग्राम्स पर डे इज सिंथेसाइज. ठीक है. नाउ समटाइम्स इन सम इंडिविजुअल्स दीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, नेचुरल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजेस in the body due to a lot of biochemical or metabolic issues. This is not due to the external diet and activity factors. उस केस में फिर मेडिसिन देनी पड़ती है. Okay, LDL again, the medicines do start when there are these high levels along with the diet and lifestyle factors. Okay, so how do we plan the diet? The diet plan remains the same. The principles more or less remains the same. जब हम बात करते हैं about planning of the diet, lots of fruits and vegetables should be there. So what happens when we are planning the diet? हमारे क्या macros होने चाहिए? Usually when a person has BP issues, ठीक है, मेडिसिन के साथ उनका बीपी कंट्रोल है, they need to lose weight if at all, then the carbs that we are going to take is 50%, proteins we are going to take is 20%, and fats we are going to take is 30%. ठीक है. This is when the person is having BP issues and the person is on medicines. तब या अगर मेडिसिन में नहीं है, हम सेल्फ उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तब भी हम ये परसेंटेज लेंगे. Now, if the person has too high BP, even if the person is on medicine, then what? We will be increasing the carbs in the diet, reducing the proteins in the diet to 15 to 20 में vary करेंगे, and fats reduce करेंगे उस केस में हम. ठीक है.
Then if there is some critical issue like एक हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी या स्टंट के बाद किसी को एंजियोग्राफी हुई है, some critical issue is there along with BP, again इस केस में हम कार्ब्स इंक्रीज करेंगे, प्रोटीन्स को 15 से 20 के बीच में रखेंगे एज पर द डाइट, एंड फैट्स को हम रिड्यूस करके 20 कर देंगे साइमल्टेनियसली। बिकॉज हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की यहाँ बात कर रहे हैं, फाइबर्स हम डाइट में अराउंड 30 ग्राम्स मिनिमम रखेंगे, बिकॉज फाइबर्स जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्राइग्लिसराइड को बाइंड करके उनको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वी विल बी हैविंग लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इन द डाइट, बिकॉज अभी आगे हम पढ़ेंगे वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट कोलेस्ट्रॉल and we need to restrict sodium in the diet. ये चीजों का हमें ध्यान रखना होता है in the हार्ट और BP रिलेटेड डाइट। कोलेस्ट्रॉल जो है हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है 300 मिलीग्राम तक। यूजुअली हम उसको मॉनिटर नहीं करते, बट स्पेसिफिकली इन द हार्ट रिलेटेड इशू और BP इशू में इनिशियल स्टेज में 300 और अगर सीवियर स्टेज है तो 200 मिलीग्राम पे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सोडियम को पहले 2400 मिलीग्राम डाइट में लिया जाता था, बट नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 1500 मिलीग्राम इन द डाइट, एंड दिस सोडियम compromises of visible and invisible sodium. Visible sodium is जो हम ऊपर से salt डालते हैं, खाने में हम पकाते हुए, कुकिंग करते हुए salt डालते हैं, and invisible is which is naturally present in the foods which is coming from the processed food. So sodium has to be restricted. Also we need to take care of the potassium, magnesium and calcium. ये जो है these are good ones. We need to meet their RDAs because these are heart protective and these controls the BP also. So basically जब हम एक heart related और BP related diet बनाते हैं, along with taking care of these issues, we will be taking care of these issues, macros and these components also. So American Heart Association ने recommendations दी है, protein 15%, carbs 55%, so it varies from 50 to 60%, fats less than 30%, minimum अगर हम fats पे जाएंगे बहुत critical condition में भी तो minimum we will go to 10%, हम 10% से नीचे नहीं जाएंगे. Okay, cholesterol as I told you 300 milligram and 200 milligram in critical. Saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids हम 8 to 10 या 7%. फूफा हम जब से ज्यादा ले सकते हैं, फूफा उससे कम. How do we calculate कि हम ये कितना ले रहे हैं? I'll just show you. Okay. So for example, the fats that you are taking in your diet is 30%. ठीक है? And 30% comes out to be, let's say 60 grams. This is just an example I'm taking, okay? Then we have three types of fats: saturated fatty acids, monounsaturated and polyunsaturated. Heart issues में या BP issues में हम saturated fatty acids, let's say हम बहुत कम ले रहे हैं 5%, monounsaturated हम 15% ले रहे हैं, and polyunsaturated हम 10% ले रहे हैं. ठीक है? So 5%, 30% जो है 60 grams है, तो 5% कितना हुआ? 5 multiplied by 60 is 300, divided by 30 is 10. So saturated fats हमारी डाइट में हम 10 grams ले सकते हैं. Likewise हम इसके लिए भी करेंगे, 15 multiplied by 60 divided by 30, so it will be 30 grams. And this will be 20 grams. Okay. So now this total जो हमारे fats हैं, ये this comprises of visible and invisible fat. Visible means जो हम cooking के लिए use करेंगे. Invisible means जो हमारे foods में naturally है. So
नाउ वी डू द बाइफिकेशन, ठीक है। अगर हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स 10 ग्राम्स है, सो ये 10 ग्राम्स की हम बाइफिकेशन करेंगे विजिबल एंड इनविजिबल में। विजिबल मीन्स जो आप यूज करोगे, सो 5 ग्राम्स अगर आप यूज करते हो विजिबल में, 5 ग्राम्स आप यूज कर सकते हो इनविजिबल में। सो दिस विल कम फ्रॉम योर डाइट। जो हमने एक्सचेंज लिस्ट की थी उसमें जो हमने फैट्स कैलकुलेट किया था वो इनविजिबल फैट था। बट आप जब नट्स एंड सीड्स ले रहे हो और फैट्स कुकिंग के लिए ले रहे हो तो कुकिंग वाले फैट्स विजिबल में आएंगे, नट्स एंड सीड्स वाले फैट इनविजिबल में आएंगे। ओके, लाइकवाइज अगर आप मूफा ले रहे हो, ये 30 ग्राम्स को आप 2 में डिवाइड करोगे, विजिबल एंड इनविजिबल फैट। विजिबल आप इसमें से अगर 10 ग्राम लेते हो तो इनविजिबल 20 ग्राम्स होंगे, ठीक है। तो दिस वे वी विल बी कैलकुलेटिंग आर साफा मूफा पूफा। और जब आप एक पूरी डाइट प्लान कर लेते हो, आप इंट्यूटिव एप्नो से डालते हो, आपको ये बाइफिकेशन न्यूट्रिएंट एनालिसिस में मिलती है। ओके, सो दिस वे वी विल बी कैलकुलेटिंग द फैट्स. This is also same. The only thing that we are going different here is trans fats, which we completely avoid. Trans fats हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं. Fibers should be there in the good quantity. Trans fats हमारी डाइट में नहीं होने चाहिए. So these are few examples of MUFA, omega-3 and omega-6. MUFA omega को हम omega 9 भी बोलते हैं, which we have done in class 2. So these oils we can take. And now if you just see soya bean and soya अलग oils हैं. Soya bean is different जो plant based oil है, soya अलग है, soya oil. Okay, so don't get confused in these two things. And olive oil भी, there are two types of olive oils that are available in the market. One is pomace, another is virgin. वर्जिन हम इंडियन कुकिंग में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत लो होता है. हम इसे सॉटेइंग के लिए या सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं. पोमेस में हम इंडियन कुकिंग कर सकते हैं वेयर वी आर कुकिंग अ वेजिटेबल एट लो फ्लेम, बट वी कांट यूज इट फॉर फ्राइंग. ओके, ऑल्सो मूफा के अंदर आपका मस्टर्ड ऑयल भी आता है, दैट इज मिसिंग हियर. सो मस्टर्ड ऑयल कैन बी यूज्ड हियर. This is the cholesterol content of different food items. So commonly consumed food items. Now you see, जैसे हमने बोला था low fat milk. Why we suggest low fat milk is proteins and calcium remain same जिसके लिए हम milk ले रहे हैं. Energy value और fat content differ करता है. And हमारा cholesterol content भी differ करता है. Milk skimmed milk है तो उसमें 2 milligrams cholesterol है versus whole milk which is having 14 milligrams of cholesterol. Okay, likewise milk में fat percentage भी vary करती है. skimmed milk में fat percentage होती है 1.5%, which is also known as double toned milk. toned milk में तो fat percentage 3% जो हमारी exchange list में दिया है, and full fat milk में the percentage is 4.5%. I think buffalo में the percentage is 6%. Okay, so depending upon the source this varies. Obviously these are the non-vegetarian sources. Again, it has good amount of cholesterol. Now if you just see this कोलेस्ट्रॉल इन घी 300 मिलीग्राम्स. सो अगर आप 5 ग्राम्स लेते हो, अप्रोक्सीमेटली 15 milligrams will come in 5 grams of ghee. That is okay. If your target is 200 milligram या 300 milligram और आप घी ले रहे हो, dietary cholesterol should be less. Okay. When we are talking about the diet management and when we are talking about CHD diet management, हम usually low fat diet ही prescribe करते हैं. We will be prescribing low calorie, low fat
low in saturated fat, high fiber diet. Now, why low calorie? In some critical cases, jahan pe the person is very very obese and he has undergone a heart surgery, हम TDEE के हिसाब से उस केस में नहीं देते हैं डाइट जो हमने इनिशियली किया था कि यूजुअली हम 1000 से 1200 कैलोरीज की डाइट फीमेल्स की बनाते हैं, 1500 to 1800 कैलोरीज की डाइट मेल्स के लिए बनाते हैं. वी फॉलो दैट. ठीक है, इन क्रिटिकल केसेस. ओके. Carbohydrate content goes from 45 to 60%. फैट 30 पे रिस्ट्रिक्ट करके as low as 10% तक जा सकता है. प्रोटीन्स हम नॉर्मल लेते हैं because the patient may or may not be doing extensive exercise because of the heart issue. Normal हम उनको walks के लिए recommend करते हैं, so we take normal proteins only. So understanding about good fats or bad fats or probably the healthy fats or unhealthy fats. Let's talk about unhealthy fats. They fall in the saturated category. उसमें hydrogenated या trans fats आ जाते हैं. They will have more fats coming from animal foods. They will be solid at room temperature. They will be basically from the animal sources. Tropical oil, coconut palm oils, saturated fats होते हैं. Processed fast food में भी saturated fats होते हैं. So these should be completely avoided in the diet. Okay. Then जब हम healthy fats की बात कर रहे हैं जो mono and poly unsaturated होते हैं, they are liquid. We get them from plant sources and plant sources में भी हम wood pressed, cold pressed या physically refined oils को prefer करेंगे. ठीक है. Nuts, avocados are good sources of fats. Omega 3 fats बहुत helpful होते हैं heart issues को reverse करने में and we get them from the seafood, but seafood में हमें omega 3 मिलता है. Okay, so when we are planning the diet, for example, हम diet plan कर रहे हैं around 2000 calories की, ठीक है. 2000 कैलोरी की डाइट में हम एक हार्ट पेशेंट के लिए 6 सर्विंग्स ले सकते हैं ग्रेन्स की. व्हाट डू वी मीन बाय 6 सर्विंग्स? 6 सर्विंग मीन्स 1 चपाती or 1 katori rice or 2 breads or 25 gram cereal which is like dalia, oats or stuff like that. We take around 2 to 3 servings of milk which is low fat, 1 to 2 servings of lean meats. Lean meats जगह हम लेंगे तो we make sure कि हम eggs अगर ले रहे हैं तो सिर्फ whites लेंगे. ठीक है. Good servings of fruits and vegetables because 4 servings तक हम ले सकते हैं fruits की because we are having a high carbohydrate diet. स्वीट्स शुगर्स नेग्लिजिबल होंगी हमारी डाइट में. नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स हम डेफिनेटली ले सकते हैं. फैट्स एंड ऑयल्स विजिबल हम कम से कम लेंगे एंड सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स कमिंग फ्रॉम रेड मीट्स वी विल नॉट बी हैविंग. What are the other lifestyle factors that we would be focusing on? 30 minutes of walking. So, whenever you're feeling that you're sitting for a very long period of time, you should stand and walk around the place that you are sitting in. Not more than 30 minutes, you should be sitting at one place. Okay. Smoking has to be completely stopped. Alcohol has to be completely stopped. Stress management is very, very important and this needs to be done. How do we manage stress? We can manage stress by involving in hobbies, involving in decluttering activities. Okay, so hobbies that gives you satisfaction. Decluttering activities जब आप declutter करते हो, clean करते हो, वो भी stress releasing activity होती है. Involving in social care. जब आप सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होते हो, you help somebody, that also gives you a lot of relief. That obviously varies from individual to individual. Walking barefoot in grass is very, very stress relieving therapy and it works wonders. And doing deep breathing is also very, very good. Specifically 4, 7, 8 kind of deep breathing is very, very good.
4-7-8 डीप ब्रीदिंग मीन्स 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करते हो, 7 सेकेंड्स के लिए एक्सहेल करते हो, एंड 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हो ब्रेथ को, एंड 8 सेकेंड्स के लिए एक्सहेल करते हो. दैट इज हेल्पफुल. There are certain foods that do help in stress relieving. Is one is chamomile tea. This is helpful. Any herbal tea like lavender tea, that is helpful. Peppermint is also very helpful for releasing stress. Then this thing, dark chocolates above 70% will be helpful. Having good omega-3s in the diet will also be helpful in dietary management of stress. Okay. Trans fat should be a big no in our diet. ओके ये बेसिकली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल, जब आप किसी का पीछे न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन देखते हो तो हाइड्रोजनेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, इन नामों से भी ये होते हैं. बेसिकली दीज आर द फूड्स दैट आर रिच इन trans fats which should be completely absent in the diet plan. Okay. Coming on to hypertension. Hypertension means high blood pressure. So जब हम blood pressure की बात करते हैं, there are two kinds of blood pressure. One is systolic, another is diastolic. जब क्या होता है, now we have seen the picture of artery. ठीक है, अगर आप ये देखते हो ये arterial piping है. ओके यहाँ पे प्लेक डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस ब्लड रश की तरह इसमें से फ्लो होता है. ठीक है, सो दिस इज लाइक अ पाइप. ये आप पाइप के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे. ओके इसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है. बट नाउ as the plaque is there and too much of clotting is there, this space becomes less. So blood को space नहीं मिलती है. So if the blood is not getting space, it is going to put pressure in these arterial walls. जब ये प्रेशर एक्सर्ट होता है आर्टीरियल वॉल्स में, उससे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर. इनिशियली ये इन कंडीशंस की वजह से एक्सर्ट होता है. मे बी देयर इज नो प्लेक फॉर्मेशन, बट दीज आर द रीजंस. नाउ हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग लाइक दिस. ओके so when it is contracting and releasing, contracting and releasing, जब वो contraction होती है तो blood flow speed से होता है. उस फर्स्ट प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, विच इज अ हाई डिग्री नंबर दैट वी गेट. एंड वंस द हार्ट इज रिलैक्सिंग, उस रेस्टिंग फेज में जो प्रेशर की रीडिंग आती है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. एंड द apparatus that we use is sphygmomanometer for measuring the blood pressure. So these are the normal readings of blood pressure. 120/80 is normal. Till this condition we do not recommend anybody to take the medicine. ये आप रिवर्स करेंगे. इसमें भी बहुत लाइट डोसेज प्रिस्क्राइब की जाती है अगर सिम्टम्स हो, बट डेफिनेटली मेडिसिन कॉल्स फॉर दिस. एंड इसमें हम क्रिटिकली सोडियम को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 500 मिलीग्राम्स पे. इस लेवल तक हम सोडियम को यहाँ पे, इस लेवल तक हम 1000 मिलीग्राम पे सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ओके एंड नॉर्मल वैल्यूज जो होती है वहां पे हम सोडियम 500 milligram रहते हैं. Sodium plays a very important role in controlling blood pressure. That is one thing. And second thing that plays very important in controlling blood pressure is fats. उसमें saturated fats और trans fats आ जाते हैं. ठीक है. Sodium restrictions. So as you know, I have been talking with you about sodium restrictions. So sodium restricted होता है बीपी पेशेंट की डाइट में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द वाटर रिटेंशन इन द बॉडी. और जब वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, सो उस केस में
Just a second. I want to show you the sodium calculation. Wait. Please note these calculations because these are not in the PDF. I am doing certain changes. Give me some time. Okay. So let's say हम एक normal individual की diet plan कर रहे हैं, wherein हमारा जो normal sodium requirement है वो 1500 milligrams है. ठीक है, 1500 मिलीग्राम्स में से हमने डाइटरी सोडियम लेट्स से 300 मिलीग्राम सबट्रैक्ट कर दिया. सो 1500 minus 300 which will be 1200 milligrams of sodium. Okay, 1200 milligrams of sodium हमारी डाइट के थ्रू आएगा. This 300 sodium will be coming through salt. Okay, now there are two instances that happens here. One instance is if you switch on to सेंधा नमक 100%. Okay, 100% सेंधा नमक में switch on कर लो. Second instance is you have half 50-50 सेंधा and normal salt. Okay, सेंधा and 50% normal salt. So ये condition दिखाई गई है wherein हम 50-50% ले रहे हैं. तो जिसमें हम 600 मिलीग्राम लो सोडियम सॉल्ट लेंगे एंड 600 मिलीग्राम हम नॉर्मल फ्री फ्लोइंग सॉल्ट लेंगे. नाउ दिस इज अ फैक्ट. 100 ग्राम लोना गिव्स यू 20,000 मिलीग्राम सोडियम. तो 600 मिलीग्राम सोडियम हमें कितने ग्राम लोना से मिलेगा? सो वी विल बी डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर. So what we are going to do, एक second. 100 gram लोना is giving 20,000 milligram sodium. 600 milligram sodium हमें कितने से मिलेगा? 600 multiply by 100 divided by 20,000. So we would be taking approximately 3 grams of low sodium salt. It is सेंधा नमक. Now you see 100 grams common salt हमें 38,400 milligram sodium देता है. So if we are taking 600 milligram of this, so again we will be doing 600 multiplied by 100 divided by 38,400. So approximately हम common salt 1.56 grams लेंगे. ठीक है. So हमारा जो total salt intake होगा दोनों को आप mix कर देंगे. So 1.56 plus 3 grams. So in a day, 4.56 approximately. Where is the approximate? Approximately आप around 5 grams salt दिन में ले सकते हो. ठीक है. But if somebody is taking 100% लोना, so 1200 milligram अगर हम लेते हैं, so 1200 multiply by 100 divided by 20,000. So in that case अगर 100% हम लोना लेते हैं तो that individual can take 6 grams of salt. So which will give more taste enhancement and it is low sodium as well. That is not going to harm that individual. ठीक है. But in critical cases जहां हम 1000 मिलीग्राम पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं या 500 मिलीग्राम पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम टोटली सॉल्ट this is salt is wrong here. Salt calculation तो हम ये कर रहे हैं. This will be sodium which is coming from vegetables like spinach is a high vegetable, high sodium vegetable. Lotus stem is a high sodium vegetable. Then beetroots are also high vegetables. Then canned foods,
हमें सोडियम ज्यादा होता है, सो जो डाइट से हमें सोडियम आता है वो 300 ग्राम्स माइनस किया है। सो क्रिटिकल केसेस में जहाँ 1000 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम में रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहाँ सॉल्ट इंटेक वेरी वेरी मिनिमल हो जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि 500 मिलीग्राम पे रिस्ट्रिक्टेड है, उस केस में हम सॉल्ट नहीं डालते कभी कभी। ओके, सो दिस इज द सॉल्ट कैलकुलेशन. Please take a note of it. It is not there in your PDF, but it will be there in the recording. I'll just wait for a minute. If you want to click pictures, you can click it. Okay, moving forward. हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या होंगे? हाइपरटेंशन के सिम्टम्स यूजुअली इज हेडेक, फटीग, कंफ्यूजन, एंजाइटी, रेडनेस ऑफ स्किन एंड विजन चेंजेस. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाई BP diet, we restrict salts and fats. We have talked about that. We have talked about the sodium also. We would be preferring to taking low sodium salts. And dietary management mein, the management remains the same as we have discussed. Energy needs meet karne ke liye overweight individuals have to restrict their calories. They need to reduce their weight. Low fat diets will be given, low energy and critical diets will be given. Quantity of fats reduce karenge, and saturated animal sources हम diet में include नहीं करेंगे. So sodium manipulation is done as depending upon the case to case. Usually अगर normal BP रहता है या थोड़ा सा BP shoot up रहता है, हम additional sources जो है जैसे baking powder and sodium that is coming from certain processed foods हम avoid करते हैं. माइल्ड सोडियम रिस्ट्रिक्शन में हम टेबल सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रिजर्वेटिव रिच फूड्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. मॉडरेट 1000 मिलीग्राम में हम फर्दर नो सॉल्ट इज एडेड, बेक प्रोडक्ट्स भी लिमिट कर देते हैं. ओके, सो दिस इज पोटेशियम, कैल्शियम, एज आई टोल्ड यू, they are very very heart protective. And अगर किसी को lactose intolerance है, definitely other sources of calcium can be included in the diet. Also, when a patient has the high BP, that patient should be avoiding alcohol. That patient should be avoiding the canned vegetables. Herbs and spices can be used like oregano, lemon juice, and lemon juice, black pepper. These can be used. It use a 3 months consistency for seeing the changes in the plan. This is the exchangeless plan which is telling कि हमें 1000 milligram हम डाइट से कैसे ले सकते हैं. Because if you are taking cereals, the cereals, any food that you take, it is going to give you sodium. So उस केस में हमें डाइट से सोडियम इतना ज्यादा मिल जाएगा, हम ऊपर से सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते. So sodium in the diet we get from animal foods, egg whites, vegetables, fruits and salty foods. So these foods हम limit करेंगे डाइट में. When a person is coming from a hospital, उस केस में हम TDEE या लो कैलोरी डाइट भी नहीं कैलकुलेट करते. उस समय हम सिर्फ राइस, फ्रूट, शुगर डाइट देते हैं, जस्ट ताकि उनका मसल लॉस ना हो and they recover with the medicines. DASH diet has same approaches as we have done in obesity and diabetes also. One has to lose weight, one has to have a healthy lifestyle, one has to have good fruits, low fat milk and milk products in the diet, good non-vegetarian foods in the diet. Trans fats diet में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, saturated fats नहीं होने चाहिए. Magnesium, calcium, protein should be there in the diet because they are protective. Okay, so basically cholesterol intake को हमें ध्यान में रखना है, saturated fats को हमें ध्यान में रखना है. Coming on to the Ayurvedic concept. Ayurvedic concept में when we talk about the doshas, there are basically 8 rules that are need to be followed in general. These rules are based on Prakriti, dosha, desha, kala, satmaya, achara, rasayana,
These depends upon कि एक disease का pathogenesis beginning कहाँ से होता है, and there are certain things that we can do in the Ayurvedic perspective is including cereals like barley, wheat. Puranchali is old rice, which is 1 year older rice. Red horse green grams are good. Mustard oil, buttermilk, ये सब हम use कर सकते हैं. Fruits we can use. The only thing is sodium rich foods हमें avoid करने हैं, which you can easily find from the intuitive app. Dry powder massages, bathing, brisk walking, yoga, pranayam भी उसे help करता है manage करने में. There are certain things that we can include in the Ayurvedic perspective. First is green tea. ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है विच इज एपिगैलेक्टोकैटेचिन गैलेट. ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. सो हैविंग अराउंड 1 to 2 cups of green tea on in a daily basis are healthy and heart protective. अर्जुना कवच, अर्जुना टी आप 2 tablespoons या 2 teaspoons या 10 grams अर्जुना पाउडर 400 मिल्क में वाटर में या मिल्क में 200 ml मिल्क में नाइसली बॉइल करके देन यू कैन हैव इट. Pomegranate juice is rich in potassium. Mosambi juice is also rich in potassium and magnesium. These take care of your heart health and BP. Garlic, ginger में anti-inflammatory, antioxidant properties होती हैं जो आपके blood pressure, cholesterol पे work करती है. Holy basil भी stress management के लिए important है and that can be taken during the day. 5 best yoga asanas that improves your circulation, opens your body channels, and they are very, very helpful. In de-stressing also is Uttita Trikonasana, Paschimottasana, Ardha Matsya, Indra Asana, Gomukhasana, Setubandh, and Anulom Vilom and Pranayam. That was all about CVDs. Okay, I'll just take your chat questions first of all. Ma'am, is it good to take veg tea in the morning and what is the best time to take? That is, having veg tea in the morning is the worst thing that you can do to yourself. Veg tea is highly, highly acidic in nature, and when somebody wakes up in the morning, that person has एसिडिक पीएच बिकॉज जब आप बहुत लंबे समय के लिए फास्टिंग करते हो आपका स्टमक का पीएच एसिडिक हो जाता है. एसिडिक पीएच में आप ऊपर से एक खाली एसिडिक चीज डाल रहे हो दैट इज डिवास्टेटिंग फॉर योर हेल्थ. Empty stomach tea should never be taken. Tea can be taken during the daytime, like after 30 minutes of your breakfast, or in the evening time around 4 or 5 p.m. that is okay. गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए डाइट में क्या लेना है? गुड ओमेगा 3s you have to take. Physical activity has to be there and good amount of fruits and vegetables should be there. Normal salt is the normal free flowing Tata salt and everything that we are taking. Water retention is जब पानी का वॉल्यूम रिटेन हो जाता है. How do you understand is you feel bloated. ठीक है, कुछ खाया नहीं है फिर भी पेट फूला फूला लगता है, और वंस यू वेक अप इन द मॉर्निंग आप कंफर्टेबली फिस्ट क्लोज नहीं कर पाते हो. यू फील कि आपकी फिंगर रिंग्स टाइट हो गई हैं. यू फील दैट देयर इज सम स्वेलिंग ऑन योर फेस. दैट आर द साइंस दैट योर वाटर रिटेंशन इज हैपनिंग. और वाटर रिटेंशन बहुत लोगों को मिथ है ज्यादा पानी पीने से होता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Water retention is because of dehydration or it is because of more salt in your diet or more sodium in your diet. 4.56 tentatively, yes, it is for normal person that I have calculated. Ma'am, so consuming right diet of potassium will decrease heart related. It is protective. वो और ज्यादा इश्यूज को खराब नहीं होने देगी और रिवर्सल में हेल्प करेगी. बट ओनली पोटेशियम इज हाई बट अदर थिंग्स आर नॉट बैलेंस्ड, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ग्रीन टी अगेन कैन बी टेकन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, but not early morning again and not before going to sleep because उसमें भी थोड़ा सा amount of caffeine होता है. Can we have water and then drink tea? No, one should have breaking the fast and then have tea, and not
कि आप nuts खा रहे हो, nuts के साथ चाय ले लो. That is the worst combination again. Nuts are very, very healthy. So you should not combine tea with some healthy snack. Is it possible to overgoing ongoing the blood thinner medications? It is difficult. Okay. In groundnut cold press oil, fat is 99 in 1 liter. That is there. That is going to be there in each. It is not only in groundnut. सब में होगा because 1 gram of fat is giving you 9 kilocalories. So वो आप groundnut लो, coconut लो, mustard लो, कोई भी fat लो, उसमें calories ये ही रहेंगी. Early morning before breakfast, Pratibha answered. Water retention answered. Please explain cholesterol diet chart once again. 6 portions. अनुपमा ये एक्सप्लेन करेंगे हम. ये आपको ज्यादा एक्सप्लेन होगा जब हम एक्सचेंज लिस्ट फिर से रिवाइज करेंगे सेकेंड टाइम. Definitely not today because today I will be answering all your questions after in the remaining 10 minutes that we have. We will be taking up exchange list. Coronary artery disease be reversed in earlier stages? Yes. ओमेगा 3 ओमेगा 6 का सुदर्शन डिफरेंस है प्रेफर करेंगे डे 2 की मैक्रोन्यूट्रिएंट की पीडीएफ में. कैमोमाइल हिबिस्कस आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं. एब्सोल्युटली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. कायान प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैम माय क्वेश्चन इज कि ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं नॉर्मली ऑयल्स हैं. तो दिस इज सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल. These oils we mostly don't use. We use olive oil and mustard oil normally in the household. So what are the sources, other sources of omega 3 which we can use? Like omega 6 हमें मिल जाता है, हम walnuts खाते हैं, हम flax seeds खाते हैं, pumpkin seeds खाते हैं. But is there any other ओमेगा reliable? 3 का सोर्स है फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स. Okay, मैम. और मैम माय सेकंड क्वेश्चन इज लाइक यू से कि जो सोडियम है हमें थोड़ा कम लेना चाहिए, नॉर्मल पर्सन को भी थोड़ा कम ही लेना चाहिए. तो जो हम मैगी मसाला आते हैं आजकल मार्केट में फॉर द एनहांसिंग द फ्लेवर्स ऑफ द फूड, तो उनमें भी प्रिजर्वेटिव होगा, तो उनमें तो फिर हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होएगा. तो वी शुड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. reduce, or we should completely avoid that things. Like we, to enhance the flavors, we just put the Maggi masala in that, or in the vegetables. So we should completely avoid, or we can use once in a while. I'll just answer that question. Just give me a minute. हाँ जी मम्मा. हाँ जी मम्मा, फोन किया था. So, Kayan, Maggi masala we were talking about. I'm just finding, showing you that. Okay, so Kayan, like if I'm seeing this, I'm just showing. I maybe पता नहीं वो visible होगा नहीं होगा. I'm telling you the nutrient ingredients of that. So sodium values which I can see is per serve. It is showing 218.3.
8.3 milligrams. So it is, yes, very, very high. So, whenever you are purchasing any packaged products, and especially these food enhancers, these are going to be very, very high on sodium. Many a times, I have asked patients that, you're having soups. So they say we are having Nor ke soups, we are having, bachelors, कि ready-made soup है, वो उपमा बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, just adding water. कहने को उपमा पोहा सूप इज अ हेल्दी टर्मिनोलॉजी, बट ये जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं और इस तरीके के प्रोसेस्ड पाउडर्स होते हैं, when you look at the back, they have literally too high sodium in them. Yes, Uzma, please ask your question. हेलो मैम। जी उज़मा। मैम आपने बताया ना डीप ब्रीथिंग के बारे में 478, तो मैंने शिवांगी देसाई हेल्थ कोच है, उनकी वीडियोस में देखा था 8 सर्कल से ज्यादा नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 478 आप एक बार करते हो, वो 1 साइकिल होता है। आप दिन में जितना ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छा होता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन मैम, ये जो पैकेट फूड होते हैं ना, जिसके पीछे जैसे मैं एक चिप्स ले रही हूँ, वो हेल्दी नहीं है, बट उसके पीछे सोडियम का मतलब बताया होता है इतना है इतना है, तो मतलब कितना ज्यादा हो तो हार्मफुल होगा? आपकी पूरी डाइट में 1500 मिलीग्राम सोडियम होना चाहिए। तो आप देखो आप पूरी डाइट में कितना ले रहे हो, और चिप्स को भी उसमें ऐड करो, एंड देन यू विल फाइंड इट आउट। 1500 पूरे दिन में पूरे 24 आवर्स की डाइट में होना चाहिए। अगर इसमें मतलब 700 है तो फिर हार्मफुल ही होगा ना, एक चिप्स से इतना सारा। बिकॉज 700 आपको सिर्फ एक आइटम से मिल रहा है, बाकी पूरी डाइट भी तो है। ओके ओके, थैंक यू। तो आपका सोडियम लेवल उस केस में 3000 मिलीग्राम तक पहुंच जाएगा। हाँ, और मैम ये जो अजीनोमोटो होता है ना चाइनीज, उसमें नमक नॉट गुड। ओके ओके, थैंक यू। Sanjeev, please ask your question. Yeah, good evening, ma'am. I just wanted to know about the pacemakers. Like a female, उनको जो palpitation थी बहुत ज्यादा हो रही थी या कभी कम हो रही थी, तो because of that she has been placed with the pacemaker. Pacemaker, और जो ये pacemaker है, it is not connected with the blood vessels, and the diet just we have seen is based on the plaque in the blood vessels. Does this imply to the pacemaker patient also? What does apply to the pacemaker patient? This diet. Yes, it does. But उनके parameters check करने होंगे every second month में. Okay. You mean to see the cholesterol blood levels? profile and everything, yes. And blood pressure needs to be monitored every morning and every evening. Okay. Thank you so much. And pacemaker में sodium will be restricted to 800 to 1000 mg depending upon his condition. This is I am talking vaguely. Okay. General terminology. And what about the oil? Which oil is prescribed for this patient? Can be this pomace olive oil, mustard oil, ये ले सकते हैं. Okay. Any kind of kachi ghani oil or filtered oil, yes, can be used. Yes. Okay. Thank you so much. Please ask your question. हेलो मैम। जी निर्वी। मैम लो बीपी के लिए क्या लेना चाहिए सॉल्ट में, मतलब सेम 1500 इज द इनटेक? हाँ, लो बीपी में आप ज्यादा से ज्यादा 1800 2000 तक जा सकते हो, एंड आप लो बीपी में कॉफी भी ले सकते हो। कॉफी? हाँ, हाई बीपी में हम कॉफी अवॉइड करते हैं, लो बीपी में हम कॉफी सजेस्ट करते हैं। ओके। और मैम ब्रेकफास्ट के साथ हम टी लेते हैं, so that's not good? That's not good because breakfast usually आप healthy ही लेते हो, that is the first meal of the day, and caffeine in the tea or coffee or green tea, any caffeinated drink is going to interfere with the nutrient absorption. ओके ओके। और मैम एक आपने बताया कि कोकोनट ऑयल इज नॉट, वो आता है कि इट्स नॉट गुड, आई थिंक ट्रांस फैट में आया था, राइट? वो कॉलम में सैचुरेटेड फैट में आता है। सैचुरेटेड, सो सैचुरेटेड फैट इज गुड, राइट? No, saturated fats are not good. They have to be least in our diet. वो 5 to 7% हमारी डाइट में होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो कोकोनट ऑयल अगर एक्सेस में लेते हैं then it is harmful, but if you are taking in limited amounts which is like 5 to 7% की रेंज में अगर आप लेते हो then it is okay.
Okay, and that canola oil is also not good, right? No, it is Canola. good. Okay. It falls in the category of omegas. Okay, so we can use that. Yeah. Okay. All right, ma'am. Thank you. Kiran, please ask your question. यस मैम। मैम और एक डाइट चार्ट जो हम बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो कैलोरीज आता है 1500, प्रोटीन 19 एंड फैट। पर अगर उसका वेट एंड एज अगर हम देखते हैं, जैसे आइडिया अगर हम निकालते हैं तो उसका आता है 3000। तो Yeah, so मैम what is the question, Kiran? I couldn't understand. हाँ, तो जब उसका बीएमआर इतना आ रहा है और जो वो ले रहा है डाइट, मतलब उसका होल डे का, वो तो इतना 1500 कैलोरीज आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए उसका डाइट, और वो वेट लॉस भी करना चाहता है, प्लस डायबिटिक भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? Okay, I got a little confused with things. मुझे कुछ शायद टाइम ऑल्सो करिए। हाँ नहीं, क्योंकि ना I didn't understood what you are trying to say, but at the end what I understood is there is an individual who wants to lose weight and who's diabetic also. यस यस यस। So in that case आप usually 50-20-30 ये रेशियो में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स लोगे, और जो भी उनकी TDE आएगी उसमें से इनिशियली आप 500 कैलोरी सब्ट्रैक्ट करके डाइट बनाओगे। उस जो TDE आता है उसमें से 500 माइनस सब्ट्रैक्ट करके मिनिमम 500 सब्ट्रैक्ट करके डाइट बनाओगे। ओके। अगर Okay. मैम हम डाइट चार्ट एक सॉरी बनाते हैं तो आपको कैसे दिखाएंगे? आपको जिस लिंक पे से मैसेज आते हैं आप वहां शेयर कर सकते हैं। ओके मैम, ओके ओके फाइन। कायान और मैम प्लीज एक और मैम, जी ये कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो कोकोनट सॉरी ग्राउंडनट ऑयल इज गुड? यस ओके, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट इज 14.6 इन 1 लीटर, हाँ, so it is good. मोनोसैचुरेटेड इज 43, poly is 41. Yeah, Is it yeah, okay? it is good. Kiran, it is good. Okay. Kayan, please ask your question. What I'm saying is कि diet planning is where we have to check the every minute details in planning the diet, like sodium. We just cannot give the carbs, and like it's the basic 50, 20, and 30. Then finding the how many grams we have to give the in the carbs, macronutrients. So in the coming week, we will also learn how to make the proper diet. Like I am now, for now, I'm able to find out I want in my daily diet I need 275 grams of the carbs, but with the help of even with the help of nutritive app, I'm not able to distribute these carbs. How to make a diet for myself. So कायन I'm little bit, आपने कौन सा कोर्स एनरोल किया है? मैम मैंने 1 6 month? मंथ्स वाला करा है। हाँ पहले तो मैंने 1 मंथ का करा था, पर बट मैंने एक्सटेंड करवा के 6 मंथ्स का करा है अभी। हाँ तो इसमें एक ना डाइट प्लानिंग का भी कोर्स आएगा, ओके ठीक है, उसमें आप डिटेल में ये सब सीखोगे। ओके मैम। तो Okay. मैम अभी जैसे 1 मंथ वाले कोर्स में हमें बताएंगे थोड़ा बहुत, मतलब जैसे थोड़ा बहुत आइडिया। यस वी विल बी डिस्कसिंग, बट डिटेल में वो डाइट प्लानिंग कोर्स में आ जाएगा। ओके मैम, ठीक है, थैंक All right, and I will just take few chat questions and then we wind up for today. Ma'am, the low sodium salt green color packet from Tata Salt is good? No, it is not good. Just check the sodium content of that. क्या सीड्स को सोक करके चबा के खाना है या डायरेक्ट ड्रिंक कर लेना है? Both ways is good. Is it advisable to mix salts in food preparation for BP and healthy? It is, but suggest कि आप सिर्फ low sodium salt ही ले तो वो better है. Nutrela is the worst thing that can be given. Is a person with the prescribed BMI considered healthy? What is prescribed BMI, Neeta? Just let me know tomorrow in the chat section. For now, let's wind up our class and I'll see you all tomorrow. Thank you so much.